Now we will begin the program. First, I would like to request Mr. Harsha Agarwal to make his opening remarks. On behalf of Federation of India Chamber of Commerce and Industry, it's a great pleasure to welcome Shri Pasupati Kumar Paras, Honorable Union Minister of Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel, Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti, Government of India, Srimati Anita Praveen, Secretary, Ministry of Food Processing, Government of India, Mr. Minhaz Alam, Additional Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Mr. Satyendra Prakash, Principal Director General, Press Information Bureau, Mr. Shailesh Pathak, Secretary General FICCI, representatives from Foreign Missions of India, delegates from industries, senior officials from Ministry of Food Processing Industries and allied departments, delegates from media, ladies and gentlemen. At this curtain raiser program to unveil the second edition of World Food India 2023. At the outset, FICCI is honored to be associated with Ministry of Food Processing India as national event partner for this prestigious event. Honorable Minister Sir, we are indeed honored and humbled by your presence in our midst today. India is the fastest growing economies in the world and offer many investment opportunities, especially in the food processing sector. The Indian food processing sector is growing with an annual growth rate of 8.3%, and its output is expected to reach $535 billion by year 25-26. We are the largest producer of milk, pulses, spices, millets, and livestock in the world, and the second largest in total food production. As we are all aware, the food processing sector in India has undergone several reforms since 2014-15, as the Government of India has accorded the food processing sector in India as high priority status, with the overall goal of establishing India as the food basket of the world. The Atmanirbhar Bharat package of policies and financial measures for the agriculture and food processing sectors have laid the groundwork for promoting global outreach, bolstering the agriculture and food processing sectors in the nation, and serving as a model to establish the Indian economy as self-reliant and self-sustaining. The Government of India has taken significant steps to unleash huge potential of food processing sectors with many flagship schemes like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Pradhan Mantri Formalization of Micro Enterprises, Production-Linked Incentive Schemes, leading to overall development and growth of sub-sectors across the entire value chain. India, with population base of over 130 crores, with rising disposable income, rising spending on food and consumer goods, and a rapidly growing food retail market with acceptance of various global cuisines, have established India as a global hub for food processing as well as food supply. Today, the possibilities for raising food processing levels are endless as India transitions from a position of scarcity to one of surplus in terms of food production. Now it's time to act and realize the full potential of the industry, giving its future potential, growth potential, and significance in India's economic and social perspective. The second edition of the World Food India is being organized with an objective to promote investments in the diverse India food processing sector and also to celebrate year 2023 as the International Year of Millets. The key pillars of WFI this year are millets, establishing India as manufacturing as well as export hub, innovation,
and sustainability, white revolution to blue revolution, and technology and digitization. The global convention will witness participation of international countries, global CEOs of major food companies, state governments, stakeholders from Indian food processing ecosystem across the value chain, participation of allied ministries and government institutions, startups, etc. With this, we look forward to your participation and support in making the World Food India a successful event. Now I request Sri Sailesh Pathak, Secretary General FICCI, to make the presentation on World Food India 2020. Thank you. धन्यवाद हर्षी। माननीय पशुपति कुमार पारस जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय अनीता प्रवीण जी, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. This is a very short and crisp presentation, but I wanted to begin by saying कि हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उनको एक पैक्ड लंच मिलेगा इस कार्यक्रम के बाद, और इसमें ड्राई मिक्स वेजिटेबल रहेगा, शाही पनीर, दाल तड़का, राइस, चपाती, बाजरे की खिचड़ी, श्री अन्न, सलाद, दही तथा मीठा, मिलेट्स का श्री अन्न रहेगा। आशा ये है कि ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और आशा है कि पैक्ड लंच आपका अच्छा रहेगा। बट आज से ठीक 238 दिन बाद ये वर्ल्ड फूड इंडिया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा प्रगति मैदान में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। 3 से 5 नवंबर अभी अपने मोबाइल फोन में कैलेंडर में सेव कर लीजिएगा। प्लीज सेव इट इन योर कैलेंडर्स। सो आई लेट यू रीड व्हाट इज ऑन द स्क्रीन। आप पढ़ना चाहेंगे, लेकिन गौरतलब बात यह है, उल्लेखनीय बात यह है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया हैपेंड इन 2017, 6 years ago, 2017 में। और किसी भी इंडिकेटर में 2017 से 2023 इन द लास्ट 6 years यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं हम फूड प्रोसेसिंग में, और इसी को शोकेस करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है। आप नीचे देखेंगे पॉलिसी राउंड टेबल्स करीब 20 से 25 होंगे, 50,000 स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन होगा, 15-15 थीमेटिक सेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। फूड स्ट्रीट राज्यवार स्टेट वाइज रहेगा, और 7 कैटेगरीज ऑफ स्टार्टअप अवार्ड्स रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा 3rd and 5th नवंबर। इसमें 5 तरीके से आप भाग ले सकते हैं। यू कैन प्रेजेंट, यू कैन प्रमोट, यू कैन बूस्ट, यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन शोकेस। हु शुड पार्टिसिपेट? और हमारे मीडिया के मित्रगण जो हैं वो इन सभी वर्गों को बता सकते हैं। हु शुड पार्टिसिपेट? पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट फूड प्रोसेसिंग, हु वांट टू शोकेस द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग, जो पैसा लगाना चाहते हैं, द पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट, एंड पीपल हु वांट टू नेटवर्क विद बेस्ट practices across the world. Just before going to the next slide, I was asking some people from the food processing industry, what are the 2 things you wanted to be said? And I can see them in the audience. Number 1, they said there's a $10 billion export potential. कितना निर्यात हो सकता है फूड प्रोसेसिंग से? और नंबर 2, it is all about value addition. कितनी हम वृद्धि कर सकते हैं हमारे अनाज में। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे की पिलर्स रहेंगे, जो श्री अन्न, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बोला था, मिलेट्स, और आज के लंच में भी आपको मिलेगा, ग्रीन फूड्स, और ऑफ कोर्स वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स और मछली, एंड ऑफ कोर्स हॉर्टिकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। इंडिया इज एन एक्सपोर्ट हब, जो हमारे इंडस्ट्री के मित्रों ने कहा, एंड अबव ऑल जो भारत सरकार की एक नीति है कि हर चीज़ में तकनीक और हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन किया जा सके, वो हमारे फूड प्रोसेसिंग में भी होगी। की एलिमेंट्स क्या रहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। सो एग्जीबिशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस, नॉलेज सेशंस, country, I can see some international delegates here, and state sessions, industry roundtables. Ultimately, FICCI is the voice of Indian industry, और हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स को और क्या चाहिए? सरकार से उत्साहवर्धन और समर्थन। B2B, B2G and G2G, business to business, government to government, and business to government meetings. Next please. इसी तरह से
digital showcasing on new innovations, and what are the achievements जो भारत सरकार ने किया है, one district one produce and न्यूट्री सीरियल्स जो हमारी सुपर फूड्स की बात होती है, फिर फूड स्ट्रीट ये स्टार्टअप चैलेंज बाय सेलर मीट्स एंड 7 कैटेगरीज में स्टार्टअप के अवार्ड्स. नेक्स्ट प्लीज. I'll let you read this. A lot of sessions during the World Food India program, but there's something here for everyone. I hope all of you from the 3rd to the 5th come and taste the savories on offer. 2017 में जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था उसके कुछ फोटोज हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, और अगला आप देखेंगे जो प्लेनरी सेशन था और राउंड टेबल. इसी तरह से इंटरनेशनल डेलीगेट्स वर देयर इन World Food India 2017. We hope to see even more international delegates in 2023. And the final slide is, this is the kind of international participation that we had in World Food India 2017. I'm confident that with all of us working together, it will be even better in 2023. Thank you very much. Dhanyawad. Thank you, Mr. Patel. And now I would request the Secretary Ma'am, Srimati Anita Praveen, to make her opening remarks.